As India's capital, New Delhi, experiences one of its worst cold spells, the city's homeless population is struggling to cope with the cold. Prime Minister Narendra Modi's ruling Bharatiya Janata Party says that 162 homeless people died from the cold in December and January. The Delhi state government, run by an opposing party, refutes this data and has offered a new winter action plan. Ishan Garg finds out how much it's helping the most vulnerable. As the sun goes down, Ratan Kapoor's day begins. He leads a homeless rescue team. Many of Delhi's homeless seek shelter at bus stops and pavements. Most homeless people here are at their most vulnerable at night when temperatures can drop as low as 1.4 degrees Celsius. So now these rescue workers are offering to move them to nearby homeless shelters in an attempt to provide some relief from this agonizing cold. But not all who are vulnerable are ready to be rescued. बहुत सारे लोग जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इजीली चले जाते हैं. लेकिन मेरी कोशिश है कि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ चलें, वो हम ज़्यादा उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं उनको लाने में. On colder nights, Ratan and his team can rescue dozens of people who are then brought to shelters managed by charities such as the Society for Promotion of Youth and Masses. They have been built by the local Delhi government, which is led by the Aam Aadmi Party. Its officials say under the party's winter action plan, accommodation for roughly 20,000 people has been built since December. 20,000 is, however, just a fraction of Delhi's total homeless population. Officials peg it at 40 to 50,000, but charities estimate it to be 4 times more, at close to 200,000 people. तो उस हिसाब से शेल्टर तो और बनने चाहिए. जिस तरह से आबादी है दिल्ली में, होमलेस की तादाद है, उस हिसाब से शेल्टर और बनने चाहिए. लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है दिल्ली सरकार के साथ कि इनके पास स्पेस नहीं है. अगर कुछ हिस्से की बात करेंगे, जैसे पुरानी दिल्ली में काफ़ी आबादी है, लेकिन वहाँ पे कहाँ बनाएंगे शेल्टर? These shelters not only protect people from the freezing temperature outside, for many they can mean the difference between life and death. काम वगैरह भी नहीं होता, इससे ऊपर नहीं जाता, ये इतना ही रहता है बस. तो किसी का काम भी नहीं कर सकते कुछ भी. मेरे जैसे जो मजबूर आदमी हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है कि यह दोनों टाइम का खाना वगैरह तो मिलता है यहाँ. तो मेरे जैसे अपाहिज भी अगर जीना ही चाहेंगे तो वो सरकार ने इतना, कोई भी सरकार है, किसी ने भी किया, हम तो किसी का नाम नहीं लेते, जिसने भी किया अच्छा किया ये. Just a few hundred meters away, thousands like Rehana still haven't found help. They say the shelters near them are unhygienic with limited resources, making them unsuitable for her 2 young children. With just a plastic sheet separating her family and the cold outside, this winter has been especially harsh. यही मदद चाहते हैं, आटा, चावल, तेल, कंबल, चादर, ये सब चाहते हैं और पैसे कौड़ी का मदद चाहते हैं. हमारे लोग के भी आदमी लोग भैया जूता पॉलिश करके क्या पाते हैं, 200-300 पाते तो खाना पक जाता है. Warm clothing and blankets are a distant luxury for many like her. Officials from the local government's Delhi Urban Shelter Improvement Board, or DUSIB, admit more needs to be done to help the most vulnerable. DUSIB का मैंडेट है कि आपको हाउसिंग प्रोवाइड कराना, लेकिन यहाँ वो एक्सपर्टिज्म नहीं है जो सोशल वेलफेयर के पास होता है, क्योंकि वहाँ पे उनका पूरा मैंडेट ही है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे. तो ये है, और इस पर मीटिंग भी कई बार हुई है, होते रहता है, उनका सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन इसको एक फ्रेमवर्क के तौर पे हमें काम करना पड़ेगा, एक होलिस्टिक डिज़ाइन बना करके काम करना पड़ेगा. The plan for the Delhi government is to one day eradicate homelessness from Delhi. But until that comes to fruition, those without shelter in the capital have no choice but to brave the winter year after year. Ishan, Garg, CNA, New Delhi.